Hello guys, this is Sukhada Kotak this side from EduCARE. वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर वीडियोस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 23rd एंड 24th अक्टूबर 2022। बिफोर स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स फॉर द डे, डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल EduCARE ऑफिशियल, जहाँ पे रेगुलरली वीडियो लिंक्स अपलोड करे जाते हैं और क्विज भी कंडक्ट की जाती है। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियो के लिंक्स के साथ साथ दूसरी एग्जाम हाइलाइट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स फॉर द डे, एलिजाबेथ जोन्स इज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। यूएस की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक सीनियर फॉरेन ऑफिसर एलिजाबेथ जोन्स को एज द चार्ज ए एफिलिट्स एड इंटरिम एट द यूएस एम्बेसी इन इंडिया। ये स्टेप taken for the advance and the most consequential bilateral partnership in the world. Elizabeth Jones, who was a coordinator for Afghan relocation efforts recently, will depart to New Delhi soon. Currently, Patricia A. Lassiana जो है वो इंचार्ज थे यूएन एम्बेसी की न्यू दिल्ली में। Men's 2022 World Team Chess Championship, India in the 12 टॉप चेस प्लेइंग नेशंस। टॉप 12 चेस प्लेइंग नेशंस में इंक्लूड किया गया है इंडिया को, यूएस को, चाइना को एंड नेदरलैंड्स को फॉर द लाइनअप इन द 2022 मेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप इन जेरूसलम, इजराइल, नवंबर 2022। दूसरे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है वो अपार्ट फ्रॉम इंडिया होने वाले हैं यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, चाइना, यूएस, अरबेजिस्तान, स्पेन, France, Netherlands, Poland, and the host is going to be Israel. Reliance Jio ने फॉर्मली लॉन्च किया 5G सर्विसेज को। ये एक टेलीकॉम ऑपरेटर है। सर्विसेज को लॉन्च किया गया था रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी के द्वारा राजस्थान में। 2022 में रिलायंस का एम था 5G सर्विसेज को मेजर सिटीज जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में लॉन्च करना है। This also intends to expand the 5G network to each and every town, tehsil, talukas across the country by the year December 2023. Earlier in the year 22, Reliance Industries के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिजाइन किया था फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द रिलायंस जियो एंड ये हैंडओवर कर दी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को। केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कन्नौज ऐप जो प्रिवेंट करेगा साइबर क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रन। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं बच्चों के साथ इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करते वक्त न्यूली अपॉइंटेड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी दैट इज CWC एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दैट इज JJB मेंबर्स को भी कोवालम में यहाँ पे इनवाइट किया था। एड्रेस करते वक्त चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चिल्ड्रन शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड मेंबर्स को एक साथ मिलकर काम करना है ताकि वो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर पाए। 91st Interpol General Assembly to be held in Vienna in Austria in the year 2023. 91st General Assembly 2023 में होने वाला है ऑस्ट्रिया में। ये ऑर्गेनाइजेशन फाइंड किया गया था इन द ईयर 1923। एंड्रियास होल्जर उसके डायरेक्टर है ऑफ द ऑस्ट्रियन फेडरल पुलिस एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विस ने इंडिया को प्रेस किया, जिसने 98th इंटरपोल मीटिंग जो है वो हेल्ड किया था न्यू दिल्ली में। उन्होंने इंडिया और सीबीआई को ये 90th मीटिंग होस्ट करने के लिए अप्रेस किया था। Starting with the daily current affair quiz, the first question for the day is, what is the rank of India in the global research on the rise of the centimillennials? The next question for the day is, India's first migration monitoring system has been inaugurated in which city? The next question for the day is, what is the name of the new generation medium range ballistic missile which was recently test fired? Please mention your answers in the comment box below. The person who is giving a correct answer will be given a shout out in the next upcoming video. The next question for the day is, which institution has won the National Intellectual Property Awards 2021 and 2022?
Coming to the answers asked in the previous video, the 5th Khelo India Youth Games 2022 will be held in which state? The correct answer is Madhya Pradesh. As per Global Multidimensional Poverty Index 2022, the largest number of poor people in the world in 2020 lived in which country? The correct answer is India. Shout out to Neha, Yashvi Gangar and Computer Man for the correct answers in the previous video. That's it guys. Like this video and subscribe to our channel for daily current affairs videos. For classroom live class, recorded lecture, books and ebooks facilities, contact on the number which you can see on your screens. For more information, download the app from the link which is given in the description box below.